My name is Elizabetha Parisi, and on behalf of SKGA Inc Australia, I welcome you all to the third episode of the virtual Spirit Harmony Multicultural Festival 2021, SHMFA. SKGA Group comprises of people who encourage young and upcoming talent in various creative and performing art forms and hone them through training, stage opportunities and recognition. The organisation also recognises the increasing popularity in fusion music. Globalisation has influenced both vocal and instrumental music, and such multiculturalism has led to an increase in innovation in music and film throughout the world. SKGA Inc Australia encourage all diverse communities to retain and express their social identity and cultural inheritance via educating opportunities to all. To proceed further in this third episode of the virtual Spirit Harmony Multicultural Festival 2021, SHMFA, let's watch and enjoy even more talent presented by the residents of the City of Kingston, Melbourne and the State of Victoria in Australia. बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। नजरों के आगे हर एक मंजर रेत की तरह बिखर रहा है। दर्द तुम्हारा बदन में मेरे जहर की तरह उतर रहा है। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, ये सुने जो बैयाना धरो ओ बलमा, बैयाना धरो ओ बलमा, बैयाना धरो ओ बलमा,
न करो मुझसे रात, भैया ना धरो ओ बलमा। ढलेगी चुनरिया तन से, ढलेगी चुनरिया तन से, तन से, तन से, हाँ हाँ हाँ, ढलेगी चुनरिया तन से, हंसेंगी रे चूड़िया छन से, हंसेंगी रे चूड़िया छन से, छन से, हंसेंगी रे चूड़िया। मचेगी झलकार, भैया ना धरो, ना धरो, ना धरो ओ बलमा। मोहे छोड़ो हाय सजना, मोहे छोड़ो हाय, मोहे छोड़ो, मोहे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो सजना, मोहे छोड़ो हाय सजना, दिया शीस उठाए सजना, दिया शीस उठाए, उठाए सजना, दिया शीस उठाए सजना, रहा मोहिनी भैया ना धरो, ना धरो, ना धरो ओ बलमा। मैं तो आप बहकी बहकी, मैं तो आप बहकी 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 बहकी, हाँ हाँ हाँ, मैं तो आप बहकी बहकी, चलो जैसी महकी महकी, चलो जैसी महकी महकी महकी, चलो जैसी महकी। जमीनिया की डार, भैया ना धरो ओ बलमा, न करो मुझसे रात, भैया ना धरो, ना धरो, ना धरो ओ बलमा।
Thank you very much for watching this music of mine. Thank you. Oh Raven, how do you keep your heavy body in the air? By only your black feather, yours in your beating chest, on your chest, and your bobbing, and you're breathing like a drowning boy out at sea, and you labor and you lumber against all of gravity's favor. Oh Raven, do your eyes, do they freeze over? Does it give you a hurting head to breathe all that heatless air? Oh Raven, oh how do you stay up there? Oh sunrise, you are but a technicolor stone. You're dreaming your way to the sky, looking for your home. Oh, your home. Now it's your lost skill across the universe. Now it's your giant splash glowing, your phosphorescence. Oh sunrise, where do you get all your gold? Why are you so hard to hold? Oh sunrise, oh you and Raven, oh you and Raven are my only friend. I've been working on this Shakespeare sonnet. This is sonnet 19 called Devouring Time.
For in time, long though the lions pause, and make the earth devour her own sweet brood. Pluck the keen teeth from the fierce tiger's jaw, and burn the long-lived phoenix in her blood. Make glad and sorry seasons as thou fleets, and do whatever you will, swift for the time. To the wild world and all her fading sweets, but I forbid thee one most heinous crime. Come not with thine out, my love's fair brow, nor draw no lines there with thine antique pen. Thus is thy course untainted, do allow for beauty's pattern to succeeding men. Yet do your worst, O time, despite the wrong, my love, in my verse shall ever live on. Lascia che io pianga, mia cruda sorte, e che sospiri la libertà, e che sospiri, lascia che io pianga, mia cruda sorte, e che sospiri la libertà, e che io pianga, mia cruda sorte, e che sospiri la libertà, ed ora fanga queste listoste de me matiri, soi pepetasi, de me matiri, soi pepetasi. Lascia che io pianga, la tua sode, e che sospiri la libertà, e che sospiri
샤 교평간 라두 라소데 해케소 스피릿 랄리
श्रीचक्रराजसिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिकये भुवनेश्वरी श्रीचक्रराजसिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिकये भुवनेश्वरी श्रीचक्रराजसिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिकये भुवनेश्वरी आगमवेद कलामय रूपिणी आगमवेद कलामय रूपिणी अखिल चराचर जननी नारायणी अखिल चराचर जननी नारायणी नागकङ्कण नटराज मनोहरी नागकङ्कण नटराज मनोहरी ज्ञानविद्येश्वरी राजराजेश्वरी ज्ञानविद्येश्वरी राजराजेश्वरी श्रीचक्रराजसिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिकये பலவிதமாய் உன்னை பாடவும் ஆடவும் பலவிதமாய் உன்னை பாடவும் ஆடவும் பாடிக்கொண்டாடும் அன்பர் பதமலர் சூடவும் பலவிதமாய் உன்னை பாடவும் ஆடவும் பாடிக்கொண்டாடும் அன்பர் பதமலர் சூடவும் உலகம் முழுதும் எனது அகமுற காணவும் உலகம் முழுதும் எனது அகமுற காணவும் ஒரு நிலை தருவாய் காஞ்சி காமேஸ்வரி ஒரு நிலை தருவாய் காஞ்சி காமேஸ்வரி ஸ்ரீசக்கரராஜ சிம்மாசனேஸ்வரி ஸ்ரீலலிதாம்பிகயே முழன்று திரிந்த என்னை உத்தமனாக்கி வைத்தாய் முழன்று திரிந்த என்னை உத்தமனாக்கி வைத்தாய் உயரிய பெரியோருடன் ஒன்றிட கூட்டி வைத்தாய் உழன்று திரிந்த என்னை உத்தமனாக்கி வைத்தாய் உயரிய பெரியோருடன் ஒன்றிட கூட்டி வைத்தாய் நிழலென தொடர்ந்த முன்னூல் கொடுமையை நீங்கச் செய்தாய் நிழலென தொடர்ந்த முன்னூல் கொடுமையை நீங்கச் செய்தாய் நித்ய கல்யாணி பவானி பத்மேஸ்வரி நித்ய கல்யாணி பவானி பத்மேஸ்வரி ஸ்ரீசக்கரராஜ சிம்மாசனேஸ்வரி ஸ்ரீலலிதாம்பிகயே துன்பப்புடத்திலிட்டு தூயவனாக்கி வைத்தாய் துன்பப்புடத்திலிட்டு தூயவனாக்கி வைத்தாய் தொடர்ந்த முன்மாயம் நீக்கி பிறந்த பயனை தந்தாய் தொடர்ந்த முன்மாயம் நீக்கி பிறந்த பயனை தந்தாய் அன்பை புகட்டி உந்தன் ஆடலை காணச் செய்தாய் அன்பை புகட்டி உந்தன் ஆடலை காணச் செய்தாய் அடைக்கலம் நீயே அம்மா
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मुरमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मुरमते साम्प्राये संनिहिते काले सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति सुकृङ्करणे नहि रक्षति सुकृङ्करणे गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मुरमते मूढजहीदनागमतृष्णां मूढजहीदनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां मनसि वितृष्णां यल्लवसे निज कर्मोपातां यल्लवसे निज कर्मोपातां वित्तं तेन विनोदय चेतां वित्तं तेन विनोदय चेतां भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मुरमते यावद्वीतो पाजनशक्ता तावनिज परिवारो रक्त यावद्वीतो पाजनशक्ता तावनिज परिवारो रक्त पश्य जीवति जहाजरते पश्य जीवति जहाजरते कथं कोऽपि न पृच्छति गेहि कथं कोऽपि न पृच्छति गेहि भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मुरमते धनजन यौवनगर्वं हारति निमिषत् कालसर्वं मा कुरु धनजन
यौवनगर्भं भारती निमिषत् कालसर्वं मायामायामिदम् अखिलं हित्वा मायामायामिदम् अखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा भज गोविन्दं गोविन्दं भज मुरमते मंदिरातरु मूलनिवास सय्यां पूतलम् अजिनं वासः सुरमन्दिरातरु मूलनिवास सय्याभूतलम् अजिनं वासः सर्वपरिग्रह भोगत्यागः सर्वपरिग्रह भोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः कस्य सुखं न करोति विरागः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मुरमते भगवद्गीता किञ्चिदधीता भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवत्करिका पीता भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवं कनिका पीता दपिगेन मुरारि समाच सकृदपियेन मुरारि समाच क्रियते ताजा ये मणिच क्रियते तस्य ये मणिच भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मुरमते
श्रीकृष्णार्पणमस्तु। वनमाली राधारमणा गिरिधारी गोविन्दा, वनमाली राधारमणा गिरिधारी गोविन्दा, नीलमेघसुन्दरा नारायण गोविन्दा, नीलमेघसुन्दरा नारायण गोविन्दा, वनमाली राधारमणा गिरिधारी गोविन्दा, वनमाली राधारमणा गिरिधारी गोविन्दा, भक्तहृदयवन्दना भानुकोटि सुन्दरा, भक्तहृदयवन्दना भानुकोटि सुन्दरा, नन्दनन्दन गोपवृन्दा नारायण गोविन्दा, हरिनन्दन गोपवृन्दा हरिनारायण गोविन्दा, हरिनारायण गोविन्दा, हरिनारायण गोविन्दा, हरिनारायण गोविन्दा, हरिनारायण गोविन्दा, हरिनारायण गोविन्दा, वनमाली राधारमणा गिरिधारी गोविन्दा, वनमाली राधारमणा गिरिधारी गोविन्दा, गिरिधारी गोविन्दा, गिरिधारी गोविन्दा। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। न जायं म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता भान भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं, कथं च पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापः, न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयमदायोऽयम्, अक्लेद्यो शोष एव चः। नित्यः सर्वगतस्ताणुर्, अचलोऽयं सनातनः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। वातापि गणपतिं भजेऽहं, वातापि गणपतिं भजेऽहं, वातापि गणपतिं भजेऽहं, वातापि गणपतिं भजेऽहं। वारणा श्रीवारणा चौवरप्रदं, श्रीवारणा चौवरप्रदं, श्रीवातापि गणपतिं भजे, पतिं भजे, पतिं भजे। भूतादिसंसेवितचरणं, भूतभौतिका
प्रपञ्चभरणं भूतादिसं सेवितचरणं भूतभौतिका प्रपञ्चभरणं वीतरागिणं विनुतयोगिनम् वीतरागिणं विनुतयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं वीतरागिणं विनुतयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं वीतरागिणं विनुतयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं वातापि गणपतिं भजे पतिं भजे पतिं भजे पुरा कुम्भसम्भवमुनिवर प्रपूजितं त्रिकोणमध्यगतं मुरारी प्रमुखधिपस्थितं मूलाधारक्षेत्रस्थितं परारी चत्वरिवकात्मकम् परारी चत्वरिवकात्मकं प्रणवस्वरूपवक्रतुण्डम् परारी चत्वरिवकात्मकं प्रणवस्वरूपवक्रतुण्डं निरन्तरौ निखिलचन्द्रकण्डं निजवामकरविद्रुदेक्षुदण्डं कराम्बुजपासबीजापूरं कलुषविदूरं भूतागारम् कराम्बुजपासबीजापूरं कलुषविदूरं भूतागारं हरादिगुरुभुवतोषितबिम्बं हंसध्वनिपूजितहेरम्बं हरादिगुरुभुवतोषितबिम्बं हंसध्वनिपूजितहेरम्बं वातापि गणपतिं भजे पतिं भजे पतिं भजे भर्गो देवस्य धीमहि
ದೇವಿಗಿರವೆ ಬಿಡುತ್ತ ಗುಡಿಯ ಕಟ್ಟಲು ತೋಹಿನ ಗಿರಿಯ ಸಿರಿಯ ಮುಡಿಯ ಹಿರಿಯ ಕಡಲು ತೋಳುವವರಿಯ ಪೈರು ಪಚ್ಚ ಪಸರ ನುರಿಯ ಪೈರು ಪಚ್ಚ ಪಸರ ನುರಿಯ ಭರತ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಪೊರೆವ ತಟ್ಟಿಲು ಜೀವನವನ ದೇವಿಗಿರವೆ ಬಿಡುತ್ತ ಗುಡಿಯ ಕಟ್ಟಲು ಸಿಂಧು ಯಮನ ದೇವ ಗಂಗೆ ತಪತಿ ಕೃಷ್ಣ ಭದ್ರ ಟೊಂಗೆ ಸಲೀಲ ತೀರ್ಥ ಪುಣ್ಯರಂಗೆ ಸಲೀಲ ತೀರ್ಥ ಪುಣ್ಯರಂಗೆ ಭರತ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಪೊರೆವ ತಟ್ಟಿಲು ಜೀವನವನ ದೇವಿಗಿರವೆ ಬಿಡುತ್ತ ಗುಡಿಯ ಕಟ್ಟಲು मैं आज की वार्ता प्रारंभ करता हूं सबसे वरिष्ठ हिंदी के योद्धा श्री हरिहर झा जी से। हरिहर झा जी, आप अपना विचार दें कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया में हिंदी का भविष्य है क्या। ऐसी स्थिति में जब खुद माँ बाप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तब हिंदी का स्थान कहाँ आता है? आप अपने विचार दें। ऑस्ट्रेलिया में मुझे हिंदी का भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम बच्चों को हिंदी के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं। और प्रोत्साहन देने में एक चीज ये है कि यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट वीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा मार्क्स स्कोरिंग है, और ये मार्क्स गिने जाते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो बच्चों को एनकरेज करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर कि हम बच्चों को एनकरेज करें कि वो हिंदी सब्जेक्ट लें। वो मार्क्स स्कोरिंग है तो वो आगे उनको यूनिवर्सिटी में उनको मन चाहा सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम बच्चों को एनकरेज करके हम हिंदी को ऑस्ट्रेलिया में प्रोत्साहन दे सकते हैं। बच्चों को ये बताना चाहिए कि हमें उनके दादा दादी माँ बाप उनसे सबसे बात करना बहुत ही जरूरी है, और ये बात करने के लिए उनको हिंदी और मातृभाषा सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी है कि उनसे हमें संस्कार मिलते हैं। ये बात हमें बच्चों को बताना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चे बहुत चाहते हैं कि उनका एंटरटेनमेंट जो हिंदी सिनेमा और गीत से हो, तो ये भी एक अच्छी बात है कि उनको हिंदी सिनेमा वगैरह सीखने के लिए। तो इस प्रकार से जब हम बच्चों को एनकरेज करेंगे, और हमारी साहित्य संध्या में भी एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि हम कितने सालों तक जो है बुजुर्ग लोग ही किया करते थे सब कुछ, लेकिन अब एक अच्छी स्थिति आ गई है कि यंग लोग, यंग जनरेशन जो है वो बराबर साहित्य संध्या में इंटरेस्ट ले रही है। तो सारांश ये है कि हम बच्चों को एनकरेज करके भी हम ऑस्ट्रेलिया में हिंदी का अच्छा भविष्य बना सकते हैं।
बहुत बहुत आपने ठीक कहा हरिहर झा जी। पर मेरा प्रश्न मैं दूसरा पूछूंगा, प्रश्न अरविंद गैंधर जी से। अरविंद गैंधर जी, ऐसी स्थिति में जब माँ बाप भारतीयों के खुद अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और वो बच्चों को जो है प्राथमिकता नहीं देते हैं, वो जो झा जी ने बात कही है कि वो जाकर अपने माँ बापों से, अपने बुजुर्गों से बात कर सकें बच्चे, तो क्या इस मामले में माँ बापों की जिम्मेदारी नहीं है? तो मैं तो ये चाहूंगा कि हिंदी पहले बच्चों को पढ़ाई जाए कि पहले बुजुर्गों को पढ़ाई जाए जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं? आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और मेरे विचार से, जैसे हरिहर झा साहब ने कहा कि हिंदी का भविष्य अच्छा है, मैं मानता हूं कि भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें अभी भी बहुत कुछ किया जाना जरूरी है। जैसे वीसी में झा साहब ने बताया कि वीसी में एक सब्जेक्ट है, इसकी वजह से लोग काफी हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन अगर सिर्फ हम एक वीसी सब्जेक्ट होने की वजह से हिंदी पढ़ें, वो पर्याप्त नहीं है। हमें हिंदी से प्रेम है, इसलिए हम हिंदी पढ़ें, तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। मुझे याद है जब हम हिंदी पढ़ते थे 11वीं या 12वीं में, हमने कबीर दास को पढ़ा, सूरदास को पढ़ा और बहुत सारे बड़े बड़े कवियों को पढ़ा। अच्छा लगता था पढ़ के, और ये भी लगता था कि बहुत महान कवि हैं। लेकिन अब जब हम उनकी रचनाओं को दोबारा सुनते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं, तो हमें लगता है कि उस टाइम जो हमने समझा था वो पर्याप्त नहीं था। उस टाइम हमने जब पढ़ा तो हम एक अच्छे मार्क्स लाने के नियत से पढ़ते थे, उसमें हो सकता है कुछ बात हम रट लेते थे। तो अब जब हम सुनते हैं और समझते हैं तो हमें लगता है वाकई कितने बड़े बड़ी हमारी धरोहर है, इतने बड़े बड़े कवि हमारे देश में हुए हैं। तो जहाँ तक बात है कि हम उसको माँ बाप को पहले समझाएं या बच्चों को समझाएं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो तीसरी चौथी क्लास के बच्चे होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव माँ बाप का ही पड़ता है। अगर माँ बाप हिंदी में रुचि ले रहे हैं तो बच्चे यकीनन हिंदी में रुचि लेंगे। और उसके लिए ये जितने भी हमारे संगठन हैं, जैसे साहित्य संध्या है, हिंदी शिक्षा संघ है या हिंदी निकेतन है, वो समय समय पर प्रयास करता है। तो मेरे विचार से इसमें हमें और प्रयास तेज करने चाहिए। और आपने अरविंद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर यही है कि प्रयास करने वाली बात, तो मतलब बात ये हुई कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को शिक्षा ये मिलनी चाहिए कि हिंदी का महत्व क्या है। और मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सुमन जी से प्रश्न करना चाहूंगा कि सुमन जी, आप भी परिवार में बच्चों से घिरी रहती है, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कैसे हम माँ बापों, मान लीजिए कि आप साहित्य संध्या से भी जुड़ी हैं और आप हिंदी खुद कविताएं लिखती हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे कन्विंस करेंगे कि आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं या आपके जो बेटे बेटी के बराबर जो है, बहू बेटी के जैसे लोग हैं, उन लोगों को कैसे प्रभावित किया जा सकता है कि हिंदी का महत्व क्या है, ताकि हिंदी का भविष्य पता लग सके आगे? उन बच्चों को प्रभावित, क्योंकि आजकल क्या है, बॉलीवुड का और ये जो कोरोना की वजह से या जूम की वजह से, जूम के माध्यम से बहुत सारे प्रोग्राम्स सामने आने लगे हैं। तो और उसी में हम लोगों का इंडिया जूम का जो ऑनलाइन मीडिया है, ये इंडिया के गांव-गांव तक पहुंचने लगी है और इंडिया की जो संस्कृति है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम जो मीडिया के माध्यम से बच्चों के सामने आ रहे हैं, तो हमारे छोटे बच्चे, मैं देखती हूँ कि हमारे छोटे बच्चे भी वैसे ही डांस करना चाहते हैं, वैसे ही कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं, बड़े अट्रैक्ट होते हैं उन पिक्चर्स को देख के, उस मीडिया के माध्यम से। पर उनको बोलना या समझना नहीं आता है, तो उसके माध्यम से वो बहुत कुछ पढ़ने के, उसको देखने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश भी करते हैं। मेरे नाती पोते हैं, वो उसको देख के चाहते हैं कि वो भी ऐसा ही वीडियो बनाए। तो उन लोगों ने भी अपने उसके माध्यम से अपना भी प्रयास डालते हैं, उसके अंदर भी मेरे से बात करते हैं, मेरे भी वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पर है उन लोगों के वीडियो, तो वो कोशिश करते हैं कि वैसे ही बनाए। क्योंकि जी सॉरी, तो ये तो बात एक हुई कि ठीक है कि वो वीडियोस बनाए। तो अब बात ये है कि ये माँ बापों को सिखाना चाहिए या बच्चों को सिखाना चाहिए कि वीडियो देखो, कि माँ बापों को वीडियो दिखाना चाहिए या बच्चों को कहना चाहिए कि बच्चों वीडियो देखो? प्रश्न वहां पे आता है। नहीं, क्योंकि माँ बाप की बात ज्यादा जल्दी से बच्चे सुनते नहीं है। बहुत ज्यादा घर में अगर आप दूसरे कोई बोल रहे हैं तो बच्चे जल्दी सुनते हैं, लेकिन अगर आप टीवी या कोई मीडिया वगैरह आप उनको दिखाते हैं तो वो जल्दी उस बात को पकड़ते हैं। तो उनके लिए आप थोड़ा शिक्षाप्रद वीडियोस ऐसे दिखाए जाएं
तो उससे ज्ञान भी बढ़ता है और फिर वो कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद वो हमारे पास आते हैं कि ठीक है इसको सीखना है, ये कैसे है। चलिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और लीजिए, अब हम जाते हैं अनीश कुमार जी ठाकुर के पास। वो आज के युवा जो हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, मुझे ये पता लगा, बड़ी खुशी की बात है। तो क्यों ना हम उनसे ही बात, सीधा सवाल करते हैं कि भाई अनीश, आप ये बताइए कि आप आखिर को हिंदी पढ़ना चाहते क्यों? जब सब माँ बाप कहते हैं कि अंग्रेजी से काम चल जाएगा, नौकरी करने जाओगे तो अंग्रेजी में करोगे, माँ बापों से भी अंग्रेजी में बात कर सकते हो, हम लोगों से भी, तो आपको क्या ऐसा धुन सूझी है कि जो आप हिंदी पढ़ने जा रहे हैं? बताएं आप अपना एक्सपीरियंस। सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार, और आपका प्रश्न को आंसर देने में, लोगों तो हमेशा हम लोग तो जो जिनके माँ बाप भारत से आए और अपने बच्चों में बोलने के लिए ऐसे पुश कर चुके हैं कि हिंदी बोलो हिंदी बोलो, वो लोग तो वो तो मेरे माता और पिता हम लोग को, मेरे छोटे भाई को भी बोलते हैं कि जब भी बात कर रहे हो दूसरे लोग से जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी में बोलो। और मुझे लगता है कि उस कारण के लिए कि नाना नानी के पास जाएंगे तो कैसे बोलेंगे, है ना? हाँ, ऐसे ही। अच्छा। और हिंदी तो मेरी एक व्यक्तिगत और सांस्कृतिक पहचान है। ये तो मुझे मेरे स्वजनों से जोड़ती है, और ये तो मुझे मेरी स्वर्णिम इतिहास की दिलाती है। ये तो 3 कारण हो गया हिंदी बोलने का। और मैंने ऐसे महसूस किया है कि हिंदी भाषा से भारत भ्रमण में बहुत मदद मिलती है, और किसी भी दूसरे देश के साथ जाएंगे या घूमने जाएंगे, फिर वहाँ की भाषा की ज्ञान होने की जरूरत होती है। अगर ये कारण है तो ये हमारे भारत के लिए क्यों नहीं हो सकता है? और और VCE, ये तो अभी बच्चों मेरे और जो शिक्षा हैं, वो जो मेरे उम्र के हैं, इनको ये तो पता होगा कि भाषा जब आप VCE में लेंगे, ये आपका एटार बढ़ता है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदी शब्दों में नहीं बता पा रहा हूँ। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ कि आपने जो बात कही कि भारत भ्रमण करने में आसानी होती है, हो सकती है आगे बढ़े, तो बात ये है कि ये बात जो है आप अपने साथियों तक कैसे पहुंचाएंगे? बात तो ये हो रही कि हिंदी का भविष्य ऑस्ट्रेलिया में क्या है। तो क्या आप ये मानते हैं कि इस दृष्टिकोण को लेकर, इस बात को लेकर कि हमें अपने देश जाना चाहिए, हम अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए, और उसके लिए हिंदी आना जरूरी है, तो ये बात कैसे बच्चों को समझाई कैसे जाए? आप मुझे ये बताएं। और ये आपको खुद को कैसे समझ में आई? आपको तो कोई भी एटार की बात आपने कही कि अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो ये बात आप दूसरे लोगों को कैसे समझाएंगे ताकि ये निश्चित हो सके कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदी मरने नहीं जा रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग सीखेंगे? बोले आप। हिंदी और दूसरों भाषा के साथ भी, हिंदी खाली एटार बढ़ाने की लाभ नहीं है, उसमें बहुत सारे लाभ हैं। जैसे आप नौकरी के लिए ढूंढेंगे, फिर एम्प्लॉयर्स ढूंढते हैं कि लोग भाषा कैसे बोलते हैं, कैसे आपका एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज होता है। और स्कूल के बाद में तो आप फिर मुझे ये बताइए कि लोग जो है, बच्चों को ये समझ कैसे आएगी? अभी स्कूलों में संख्या नहीं है बच्चों की, हिंदी पढ़ने वालों की, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों की, तो ये कैसे बढ़ेगी संख्या? उनको बच्चों को कैसे समझाया जाएगा ताकि हिंदी का भविष्य उज्जवल हो? लोगों को बच्चों को समझा सकते हैं कि अगर ये आप हिंदी सीखेंगे कि ये इतने सारे लाभ हैं। जैसे हम पहले बोले थे कि एटार, आपका एम्प्लॉयबिलिटी, फिर आपका जो रूट्स हैं, जैसे आपकी पूरी आइडेंटिटी है, जैसे आप पले बढ़ रहे हैं। हिंदी तो एक भाषा है, हम लोग दूसरे लोग से बात करते हैं,
सो और अगर आप दूसरे लोग से बात करेंगे फिर आपको ज्यादा पहचान होती है दूसरे लोग के बारे में और अपने चलिए। भाषा के बारे में भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए जो आज की ऑस्ट्रेलिया में रह रही आपकी पीढ़ी के लोग हैं, उनको ये बात समझाए, है ना? जी। तो आपको ये विश्वास है कि लोग सीखेंगे? सही। आपको ये विश्वास है कि लोग सीखेंगे, बात हमारी मानेंगे अगर कुछ लोग कहेंगे? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो बात आपकी हो गई दुरुस्त। अब मैं आता हूँ केट के पास कि केट, मुझे आप ये बताइए कि भारत का जो व्यापार है, बिजनेस जो है, ट्रेड है, वो बढ़ रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। यात्री लोग भी जो है, पर्यटन के लिए भी बहुत लोग जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि इस दृष्टिकोण को रखते हुए क्या जो हिंदी भाषी लोग नहीं है वो हिंदी आगे चलकर सीखेंगे, हिंदी का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं? पहले साफ बताना पड़ेगा कि हम जैसे गोरे लोगों के लिए हिंदी सीखना ज्यादा आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी जोर देना चाहूंगी कि किसी भी दूसरी भाषा सीखने सभ्यचार खजाने की चाबी है ना, एक पुल है ना, दूसरे लोगों को, दूसरी संस्कृतियों को। और हिंदी जो है वो एक बहुत खास चीज है, क्योंकि हिंदी खुद बहुसंस्कृतिवाद भाषा है ना, जबान है, जिसमें कई अलग अलग देशों का असर है ना हिंदी में। और यदि हम हिंदी सीखें कुछ ना कुछ, तो हम फिर कई लोगों की दुनिया के बारे में कुछ सीखेंगे, है ना, जैसे अरबी लोग, पाकिस्तानी लोग, ईरानी वगैरह वगैरह। और इस सब के जरिए हमारा काम आता है ना, क्योंकि व्यापार जो है इसका एक जज्बाती भावनाएं पर आधारित है ना, कि यदि हम महसूस करते हैं कि जी मैं आप के साथ थोड़ा अच्छा संबंध बना सकूं, तो इसका बहुत लाभ हो रहा है ना। और उसके बिना थोड़ा सा ठंडगी फैल जाता है ना। केट, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आप क्या सोचती हैं इसमें कि इसका मतलब आपका कहना है कि भारत में, ऑस्ट्रेलिया में हिंदी का भविष्य बन सकता है, या वो हिंदी का जो है ज्यादा प्रयोग किया जा सकता है? पर आप इसके लिए क्या कुछ शॉर्ट में बताएंगे, कुछ सूक्ष्म में क्या करना चाहिए? जी मैं कोशिश करती हूँ। लंबी बात थोड़ा लंबी बन जाती है, क्योंकि कोई बात नहीं, जिसे मैं आपको व्यक्त कर रही हूँ। लेकिन अनीश जी की बात सुनते सुनते मुझे लगता है कि आजकल आप सबको ये सुझाव देती हूँ कि हमारी बातचीत इटाली लोगों से होना चाहिए, क्योंकि मैं इस देश की हूँ, है ना। जब मैं छोटी थी, बहुत सारे लोग इटाली देश से यहाँ आके बस गए, है ना। और धीरे धीरे उनकी रसोई, उनके खाना, उसके वेश वगैरह इस देश में फैल गए, और जिससे हमारी रुचि बन गई, है ना, हर इटाली चीज के लिए। और ऐसे है कि तो फिर धीरे धीरे इटाली भाषा हमारे ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में मिलकर आ रहा है ना। और उसका नतीजा क्या हुआ कि हमारे बच्चों को इटाली भाषा सीखने का प्रेरणा है, शौक है ना। और हम इस कहानी को देख के हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि इटाली भाषा कैसे थोड़ा कूल बन गए, है ना। जैसे कि एक उदाहरण देती हूँ कि जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, है ना, चाइल्ड केयर में, तो वे चाइल्ड केयर स्टाफ मेरे बच्चों को थोड़ा सा गाना वगैरह सिखा दिया, है ना, छोटी उम्र से। तो थोड़ा अपना बन गए, है ना, इटाली भाषा। और वही सोच होना चाहिए हम लोगों के बीच में, है ना। जैसे कि भारत में हम देखते हैं ये विज्ञापन वगैरह जिसमें इंग्लिश होता है,
तो यहाँ भी थोड़ा ऑजी इंग्लिश होना चाहिए। धीरे धीरे ये असर फैल जाए कि जैसे हम लोग आजकल थोड़ा मिर्ची खाना पसंद करते हैं, वही स्ट्रेटजी होना चाहिए मेरे बात बहुत अच्छा आपने कहा। और इससे ये साबित होता है कि हाँ, भारत का और हिंदी का जो भविष्य है वो अंधकार में नहीं है, सिर्फ हम लोगों को प्रयास करने की आवश्यकता है। और समय के अभाव को देखते हुए मैं सबसे वरिष्ठ हिंदी के साहित्यकार अपने हरिहर झा जी से ये आग्रह करूंगा कि 2-3 सेंटेंस में ये बताएं कि इससे पूरा कंक्लूजन ये निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि हम लोग जो संस्थाओं से जुड़े लोग हैं, हिंदी की संस्थाओं से, उनका ये कर्तव्य बनता है कि लोगों को शिक्षित करें, उनको एजुकेट करें। और आप क्या कहना चाहेंगे कुछ शब्दों में, क्योंकि समय की समाप्ति हो रही है। जी सुभाष जी, आपने ये बिल्कुल अच्छी बात कही कि हमें किस तरह से, अब यहाँ पर सेंसस लिया जाता था, लोग अपने घर में हिंदी बोलते हैं लेकिन सेंसस में वो हिंदी लिखवाते नहीं थे। अब जब सरकार को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर हिंदी भाषी लोग बसते हैं तो सरकार भी हमें किस तरह से हेल्प कर पाएगी। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें संस्थाओं को इस बात का प्रचार करना चाहिए कि हमें हिंदी भाषा का महत्व सबको बताना चाहिए, और हिंदी का अपना रिकॉग्निशन सेंसस में या कहीं भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह जो भी है कि हमें इंस्टीट्यूशन में हमें ये मदद चाहिए, तो हमारी जो मांग है वो बतानी चाहिए और हमारी जो जरूरत है उसकी आवश्यकता को भी हमें दूसरों को समझाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरिहर जी। और इससे सिर्फ ये साबित हुआ कि जो हिंदी से जुड़ी संस्थाएं हैं उनको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और लोगों को एजुकेट करना चाहिए, और कुछ सरकारी स्तर पर ऐसे कार्य किए जाने चाहिए जिनसे लोगों को हिंदी का महत्व पता लगे और ये पता लगे कि कितने लोग हिंदी बोलते हैं। सेंसस खास तौर से जनगणना में ये बात निश्चित होनी चाहिए कि जो लोग, अभी 2 ही भाषाओं का प्रयोग होता है, अंग्रेजी या हिंदी या पंजाबी लिख सकते हैं, इसमें होना चाहिए कि कोई भी हिंदी भाषी 2 से अधिक भाषाएं बोलता है। इसलिए हिंदी लिखने का एक अपॉर्चुनिटी या एक कोई ऐसा जरिया होना चाहिए जो लोग बता सकें और सीख सकें। मैं इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना अपना योगदान दिया, और इसी के साथ मैं ये क्लोज करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। Hi, my name is Tarek Bakhtani and I'm a youth leader within Afghan Australian Philanthropic Association, and I work as a treasurer for Afghan Diaspora Unity Council. Over to you. Hello, thank you Tarek. My name is Adiba and I also work closely with the APA and I guess as an Afghan Australian within the community, assist with resettlement in Australia, Afghan women, refugee resettlement, and yeah, have been a proud member of the Australian community in Melbourne for the past 30 years now. Yeah. So I started my youth work back in 2014 when I started studying in RMIT University. My main motivation came from Foundation House because when I came to Australia in 2010, Foundation House had a program, it was called UCAN 2. So through the program of UCAN 2, I got introduced to volunteers and volunteering work and working with the community, and I was very passionate about that. So that's why I started working with APA youth community. As a youth leader, I do organize sporting events, other cultural events, music programs for the Afghan youth ranging from 16 to 24 years old. And I do help a lot of Afghan youth with if they are suffering with mental health illness or if they have family violence problems. So, and we do have a lot of different other programs that we work closely with the state government. Those programs are such as Victoria Police comes and talks to our youth, our Afghan youth, in order to help them understand Australian way of life
and understand how to follow the law and how to make a better community. And as well as with current crisis, we work with DHHS and through Uniting organization via COMAC program, we do promote the coronavirus vaccine to our youth and to our Afghan community. Yep, and I think platforms like this are really important. Really happy to be part of the Spirit Harmony Multicultural Festival. Thank you for having us to really talk about how multiculturalism and diversity has excelled and succeeded in creating a national identity of Australia. Because I mean, a lot of countries and cities around the world are multicultural, but and Melbourne, in fact, and it's important. Multiculturalism is important because it really weakens and dilutes ignorism through ways of diversity and cultural equity. And so when we speak about Melbourne, we see that Melbourne not only promotes it through programs that Tariq and Mr. Noor Ashna and Nawi Jalali are part of, through community implementation and public endorsement of such programs to assist refugees in resettlement and to assist really in a soft integration, but to really for people that are like Afghans that are determined and have a vision, that hope really, that assistance that they get from organizations like APA and the Afghan Diaspora Association really helps in creating that stepping stone towards being a balanced society. And studies have shown, the Australian Human Rights Commission I saw had said that around 83% of people that have migrated to Australia have identified themselves as Australians immediately after the settlement has been completed. And yeah, I think, Tariq, if you want to. Yeah, so as Abida said, we do promote harmony between communities. So in our programs, let's say our Eid programs, Independence Day, Nowruz programs, and all the Afghan community events, we do invite other communities like from South Asian communities, from South American communities, and all the neighboring countries that are surrounded to Afghanistan. We invite them into our culture. We show them what our culture is in order to bring a harmony between people, because that's what we are about in Australia. We are about multiculturalism, and we do promote multicultural events in our community in order to make a better society and make Australia and Melbourne especially much more beautiful as a society and as people. And if I can add, Tariq, like Melbourne, I think really it not only promotes multiculturalism, I think Melbourne also thrives on it. Of course. Do you know? Because through these celebrations that we hold, it's not just about the differences, right? Because they're so radically different. These celebrations really, they ensure that through celebrations we come together and understand each other better. Exactly. So I really love that. I love that, you know, I've taken some of my friends to the Nowruz festival, and they've learned so much from that one evening than I could have ever probably spoken to them about. But really, I think platforms like this, again, is so important for us to speak about, because Australia, being a humanitarian capital, we have a responsibility to pay heed to the plight of Afghans and the refugee crisis around the world, because what Afghanistan is going through right now is horrific. It is horrific for women and children in particular. And you know, I think whatever we can do, it should be set as a perfect standard to Australia thriving to be that humanitarian country and a strong nation, such a strong community
that it has to then help with the global crisis that we are facing right now. Exactly, yeah, you actually touched on a very important topic, which is the current crisis of COVID, especially in Afghanistan as well. A lot of people are suffering and a lot of people are going through a lot of hardship. So this is our time now, because we have been suffering and we have been in lockdowns due to the coronavirus. So now we have to come together as a community and bring all the communities together in order to create harmony, in order to help each other, to make our bond much more meaningful and powerful as a community, and try to help Melbourne and help Victoria and Australia in general with all the problems that we are going through. That's why I want to thank Mr. Daniel Andrews as a Premier. He's been doing a fantastic job with all the works that he's been doing in order to keep our community in order during this pandemic time. Absolutely. And as well as the state government, they have been promoting, endorsing coronavirus vaccines, and they have been helping our communities. I work with them closely in order to promote the vaccine, to help our community members to stay safe and look after their health, not only their physical health, but their mental health and the family problems that they have, and which is really important as a human being. And that's why I'm always working with the community. So thank you very much. Yeah, thank you. And I think I'd just like to close off with, with Afghans that have come to Australia. We, like every country, every nation has a story, and the story of Afghanistan is one of perseverance, is one of hope, and I think multiculturalism is really important within Australia to create a strong community and a strong nation like Australia. Yeah, thank you very much for listening. So now I want to introduce Mr. Dur Ashna, the President of Afghan Australian Philanthropic Association and the President of Afghan Diaspora Unity Council. And I'd also like to introduce Mr. Naweed Jalali, the Secretary Assistant to the Afghan Australian Philanthropic Association, as well as restaurant owner of Cabana. My name is Dorashna. I'm the President of Afghan Australian Philanthropic Association and also Afghan Diaspora United Council. I work for this association about 22 years, and also I have a radio program in 3CR. Before also we run in this program, still we have this program. The name is the radio program Awaz Dost. This radio program for our community, for both language, Pashto and Dari. We united Afghan community here to help to the Australia society, Australia government, and also another community. My name is Naweed Jalali. I am also a member of the Afghan community in Australia, and also we have a family business, Cabana restaurant, which is located in Melbourne, Australia. So we help the community throughout with Mr. Dorashna, helping them through this association of the refugee program and all other associations. Our association aims provide different support to the community, like culture, education, also sport, and for a different issue. We have every year culture celebration like Afghan New Year festival and Eid celebration, and also we had different project in the community. For a music class, we had free class for the new Arab people
to teach them the music. And also we had part a different project for the young people, like sport club. All newer people when they come, they free training in the sports club. And also we have for the lady some program every week or some time they have meeting, and also they have some program to help to the whole community and special for the women. And also we have a program for the different category people like young people, children, women, also for the adult to work in the different area and also help to the each other, and special for the people to not get stressed. And also we have good connection in relationship with the other community like India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, and other. I also work in the SPARC. This is a council for the Southeast Pacific country here in Melbourne. Our association have good relationship with the government and also the state government and the council, and also another member of the parliament. We have a good relationship with another organization here in Victoria. We have a different project. Our aims also work with the newer people when they come to Australia. We help these people for the establishment to the community, and also we help about different needs they have. Also, we support the people, the family members from our community. They living very bad situation in Afghanistan, Pakistan, and also India. Especially this time to Taliban come to in Afghanistan, some educated people, lady, and also people work before the government, their life dangerous. We help these people to come to Australia, and their life is safe here. We have a different project in the community. Throughout our family business, our restaurant, we helping bringing all these multicultural, not only Afghans, also we bringing different diversity, different people from other nations like Pakistan, India, Lebanese, and all these people we bringing together, and we have also working together in terms of as Mr. Durashna also said, we working together as a Afghan community, helping people who newly arrived from Afghanistan, especially with the situation what happened with the last month the Taliban took over. So we always being there with them and helping them. Some of them they have some language problem, and also we help them throughout our community, and we give them the best advice as well. Our association have different program for the community. When we have cultural program like Afghan New Year Festival, we invited government, member of parliament, and also
another community leaders. I would like to thank you, Daniel Andrews, Primary, and also other member the Parliament, the state, and member of Federal Parliament, and also the councillor to attend our program, and we have a very good relationship. They all the time they support our community. They support our different projects in our community, and also I would like thank you the whole part they support me and also our member the community to provide different award for everyone. I got every year award for the state government and local government, and also for another organization for my work in the community. I and also my association get award for the different achieve we had in the past. Throughout the association, as Mr. Ashno also had some more explanation, we always working out with the community, and in terms of our family business every year, in terms of our feast, and also we have some feast, a few feasts in each and every year, like New Year, and other days. Through our culture, I would like to thank Mr. Daniel Andrew, our Premier, and also we thank our State Government of Victoria. They are always helping us, our community. They are always active in terms of whatever we need. So we are really thankful for them, especially in this pandemic time, which is really hard for everyone to go out. So we are always appreciating the State Government of the Victoria and Mr. Daniel Andrew. Thank you very much. Also, we work with DHS and WIMC about the COVID-19 and vaccine. We had different information session for the community. We asked some doctor to explain to the community to have the injection the vaccine, and also we work with the government about the stop the coronavirus in the community. This is very important for us. I would like thank again to the state government for the good help to our community in this hard time in the situation now in the community about the COVID-19. So now I'm inviting Member of Parliament and Minister for Disability and Aged Care, Mr. Luke Donnell, to come and speak to us about the Spirit and Harmony Multicultural Festival. G'day, my name's Luke Donnell and I'm the State Member for Narre North, and I'm very much the proud representative of the largest Afghan community in Australia. A people of great history, great pride and great learning. But a country, as we all know, which has been bedevilled by the games of the superpowers and been so adversely impacted by that. Obviously, recently we had the withdrawal of both American and Australian, the Australian government withdrew its embassy there, which has left Afghanistan in a terrible situation with the fall of the country to the Taliban. And we know the great fears our local community has of the Taliban, to put it mildly, and the dangers for both women and men, and both the threats, the murder and the like which will occur during this time. I can honestly say that I've never had a more difficult time to be listening to so many stories of so many members of my local community who have family over in Afghanistan, who are having to hide, who have been threatened, who have been killed, to be honest.
and it's probably it is the most difficult time that I've experienced listening to stories, and it's not because I don't want to listen to the stories. It's the sense of what can I do? And unfortunately, in many ways, I can keep talking, keep pushing, keep harassing the federal government, but at the moment they're not listening. As I was just saying, the fall of Afghanistan has been terribly distressing for the local community, but more so than that, it's come at a time when obviously we've been right in the heart of an international pandemic. It's obviously been a time when people are isolated, aren't able to get together with families in the same way they used to previously. And I guess in many ways, COVID's made it very difficult for families to get together and support one another while the fall of Afghanistan has occurred. So I can understand it is a terribly difficult time and terribly distressing time for our Afghan community. For me, what distresses me the most is the response of the federal government. And I guess there's three concerns I have here. One, the paucity of visas. Yes, we've got 3,000 visas for Afghan personnel who worked with the Australian Defence Department. And yes, those 3,000 visas have been processed, but that's all we've got. All the onshore family and partner and humanitarian visas that I have applications for presently simply haven't gone anywhere for 5 years. They simply haven't put the staff in to process them, whereas I have visas from other countries in terms of partner and family visas which have been processed in under 12 months. To say that is disappointing and discriminatory would be putting it mildly. I'm terribly upset about that. In terms of the offshore visas, there is no offshore visas presently the federal government has committed to in that sense for Afghanistan specifically. We've got family members of our community, both inside and outside of Afghanistan, trying to find pathways to safety. And at this stage, the federal government is not providing those pathways to safety and is simply deciding it will ignore the situation. This is not the Australia I grew up in. This is not Australia what Australians want. When the Chinese, in terms of Tiananmen Square, were in trouble, student visas and humanitarian visas were provided here. This is a normal way to responding to crises like these, and unfortunately our federal government simply hasn't done that, and that is, to put it mildly, terribly distressing. But I guess on a positive note, I want to talk about the great work of our Afghan community leaders and their community groups. During COVID, it's been essential that we can communicate directly with the Afghan community, and it needs to be done through our community leaders, whether they're doing videos or alike. For argument's sake, Dorashna at the Australian Afghan Philanthropic Association has undertaken that work to send the message out to many members of his community. Gula Beeson at the Afghan Women's Association has done a lot of food relief packages and the like, and the Afghan Students Association, Baralai Rahimi and his family. There are so many groups, including so many Hazara groups as well, who've done marvellous work reaching out. And this is about the whole Afghan community. This is not about one part of the community or another. It's about supporting one another. And what I've seen is this incredible generosity, incredible love, incredible support going out during this difficult period. So I really want to thank those organisations I've mentioned and their leaders, and there's many others I probably failed to do so. I acknowledge that I don't have all the names of all the marvellous groups I've worked with during this period who've done marvellous work to get the messaging out about safety in relation to COVID, but also providing support, whether it be face masks, food relief, things like that have gone marvellously. So I just want to very much say how grateful I am that our community, Afghan community leaders have stepped up, done that marvellous work and supported their families and their communities so very well during this difficult time. So I guess what I really want to say is keep strong, keep safe, but how proud I am of representing
the large Afghan community in my electorate, which is the largest in Victoria, and I'm very proud of that. I just want to say the love and the care that you show to one another and the support is marvellous, and that I'm just terribly proud to be a representative of you in the State Parliament. Thank you very much.